Over a month ago, we told you how China is trying to recruit Gorkha soldiers and induct them in the People Liberation Army. As that decision remains in the pipeline, a new development has come to light. Nepali Gorkhas are reportedly joining Russia's famous Wagner group. Do you remember the Wagner group? Yes, the one that recently launched a revolt attempt against Russian President Vladimir Putin's government. आप सबको पता है कि नेपाली गोरखा इस टाइम पे चाइना और साथ में रशिया की आर्मी में जाने की बात की जा रही है। आज हम इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट देखने वाले और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन आर्मी नेपाली गोरखाओं के बारे में क्या बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि पिछले एक साल में इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफी खराब हो चुके हैं। अब ये नेपाली गोरखा 4 सालों से इंडियन आर्मी में भर्ती तो नहीं हुए, बट उसी का गुस्सा नेपाल के ऊपर उतारा जा रहा है, इंडियन मीडिया उतारता हुआ जा रहा है। तो आज हम इसी रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया जो है वो नेपाल की गोरखाओं के ऊपर गुस्सा कर रहा है। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं नेपाली गोरखा अभी तक इंडियन आर्मी में शामिल क्यों नहीं। Over a month ago, we told you how China is trying to recruit Gorkha soldiers and induct them in the People Liberation Army. As that decision remains in the pipeline, a new development has come to light. Nepali Gorkhas are reportedly joining Russia's famous Wagner group. Do you remember the Wagner group? Yes, the one that recently launched a revolt attempt against Russian President Vladimir Putin's government. Modestly built Hindus, religious and devoted, calm in nature yet ferocious fighters with the warrior intuition in their blood. We are talking about Gorkha soldiers. How they became a part of the Indian Army, why do the world's biggest superpowers want them in their forces, and why are Gorkhas the world's mightiest soldiers? This is their story. About 120 km northwest of Kathmandu, Gorkha is a small district in Nepal in today's context, but with immense historic significance, where a majority of people belonging to the Thapa, Magar, Gurung and Rai tribes reside. Kings, generals and the army of Gorkha conquered several small scattered kingdoms into one big region and named the whole occupied region Nepal in around 1767 AD. The Nepali Gorkhas, who are considered fierce warriors, are reportedly joining the Wagner Group, which is Russia's private military company that revolted against Russia's President Vladimir Putin recently. Wagner mercenaries are now headed back to their base after Putin agreed to allow their leader to avoid treason charges and accept exile in Belarus. Wagner Group has been seen as more efficient than the Russian army, especially after Wagner mercenaries won for Russia the control of Bakhmut, a small but strategically located city in eastern Ukraine. On 16th of May, Russian authorities made it easy to access Russian citizenship after 1 year of military service. Since then, hundreds of Nepali youths have joined Russian forces as contract soldiers. Some of them are even retired from the Nepal army. However, retired Nepal army official Major General Binoj Basnyat called it a concerning situation, as he said that the Nepal government is not being able to do anything since these Nepalese soldiers are making the move in their individual capacity. While Russian citizenship is a big attraction for the Nepali youth, another factor is the end to their recruitment in the Indian Army. Several videos have surfaced in social media showing Nepali youths taking military training in Russia. The relationship between India and Nepal has been rolling downhill in the last decade. In June 2022, India launched the Agnipath scheme for the Indian Armed Forces by making a way of recruiting channel at a young age and retiring 3/4 of the batch every 4 years. But the new scheme had no provision for a pension scheme, and that did not sit well with the youth of Nepal. Why is that? Because so far Indian Army has been a lucrative option for the Nepalese youth, as the payment has been 2.5 times what the Nepalese Army pays,
and the pension provides economic and social security. The job in the Indian Army also provides Nepalese nationals with the option to settle down in India. The salaries and pensions of the Indian Army Gorkha soldiers form a significant part of income in rural Nepal. The Nepalese soldiers in the Indian Army bring $620 million in remuneration, while Nepal's defense budget is all of $420 million. The Nepalese government, led by the communists who are against Nepalese Gorkhas serving in Indian Army, historically halted the recruitment process, using the refusal by the Indian government to make an exception for the Gorkha soldiers under the Agnipath scheme. The Indian establishment has been hoping that the recruitment process will commence once elections are over in Nepal, but so far there has been no movement. During the Ukraine war, Russia started offering several benefits to Wagner mercenaries that it offers to its own soldiers. Irregular army recruitments, such as of convicts and foreign nationals, are typically done by Wagner, which has recruits from several Baltic and Nordic countries. Wagner pays up to $2,500 to its recruits, when average monthly income in Russia is well below $1,000. For Nepali youth, this is quite a big sum. With dissatisfaction from the Indian government over the Agnipath scheme and with the bait of Russian citizenship, how will Nepali Gorkhas help Putin's private military? वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। इस टाइम पे इंडियन मीडिया के अंदर और इंडिया के अंदर काफी गुस्सा इस बात पे पाया जा रहा है कि क्यों नेपाल के गोरखा इंडिया के अंदर शामिल नहीं हो रहे और ये जाके रशिया के अंदर काम करने वाले और रशिया के अंदर शामिल होने वाले। आप सबको पता हो कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया की प्राइवेट आर्मी को काफी ज्यादा जो है वो गोरखाओं की जरूरत पड़ी है और ये उन गोरखाओं को 50,000 रुपए महीना देंगे और साथ में कुछ ज्यादा अमाउंट भी देंगे, तकरीबन 4-5 लाख की अमाउंट देंगे अगर वो 1 साल के लिए काम करते हैं। अगर 1 साल से ज्यादा काम करते हैं तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी और इनकी अमाउंट भी इंक्रीज होती है। जैसे आपने इंडियन आर्मी के अंदर देखा होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर आप काम करेंगे आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे और आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, वो भी सिर्फ 3 साल अगर आप काम करते हैं। अगर आप रशिया के अंदर काम करते हैं तो आपको रशिया की जो है ना सिटीजनशिप भी मिलेगी, साथ में आपको 50,000 रुपए मंथली सैलरी भी मिलेगी। इसके अलावा आपको तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप 1 साल काम करते। 1 साल से अगर आप ज्यादा काम करेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपकी अमाउंट भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी और वहां पे आपको जगह भी मिलेंगी, घर भी मिल सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए इंडियन मीडिया के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है कि पिछले 4 सालों के अंदर नेपाल के गोरखा अभी तक इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हुए। पिछले 1 साल में तो उनका एक डील हुआ था, एक अग्निपथ स्कीम के मातहत जो है ना नेपाली गोरखाओं को शामिल करना था, जिसकी वजह से अभी तक तो कोई भी नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर शामिल नहीं हो रहा। चाइना यहाँ पे जब बात कर रहा है कि भाई हम नेपाली गोरखाओं को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करेंगे, रशिया के अंदर आर्मी ने ये काम कर दिया और रशिया के अंदर जो है ना काफी सारी नेपाली गोरखा जो है काम कर रहे हैं और ये उन गोरखाओं के लिए काफी काबिल एतमाद और काफी अच्छी बात है जो लोग जो है ना इंडियन आर्मी में नहीं जाना चाहते और जो लोग चाहते थे कि भाई हम अच्छे तरीके से किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके अपनी सर्विसेज देंगे और अच्छी काम करेंगे तो वहां से हमें सैलरी भी अच्छी मिलेगी और वहां से जो है हमें जो है वो वहां की सिटीजनशिप में मिलेगी। तो यहाँ पे नेपाल के गोरखाओं के लिए बेस्ट और बहुत अच्छी बात यही है कि वो अगर इस टाइम पे रशिया की आर्मी को ज्वाइन कर लेते, रशियन प्राइवेट आर्मी को ज्वाइन कर लेते तो इनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनको यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे या इनको सिटीजनशिप भी मिलेगी। अगर आप इंडिया के अंदर काम करेंगे तो आपको इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी, बट आपको सिर्फ फिक्स 12 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। वहीं पे अगर आप रशिया की आर्मी के अंदर काम करेंगे तो 3 साल आप काम करेंगे तो 12 लाख की जगह 15 लाख आपको मिलेंगे, क्योंकि 1 साल के 5 लाख रुपए। तो अगर 3 साल काम करते तो आपको 15 लाख रुपए भी मिलेंगे, साथ में आपको सिटीजनशिप भी मिलेगी और इंडिया से सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो ये सारी चीजें इंडिया नेपाल के और इंडिया रशिया के और नेपाल रशिया के बीच में हो सकते हैं अगर नेपाली गोरखा जो है ना रशियन आर्मी सेलेक्ट कर लेती है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, शेयर करेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।